29 अक्टूबर है और मैं यहाँ सियोल में हूँ और आज Day-2 है यहाँ पे। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए कि ये यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टर्स की, जिसको मैं अटेंड करने यहाँ पे आया हूँ। और अभी सुबह का वक्त है, 7:20 हो रहे हैं यहाँ पे। और अभी मैं नाश्ता करने आया हूँ और इसके बाद हमारा जो है आज का जो दिन है वो एक एक्सकर्शन ट्रिप है, जो बेसिकली सैमसंग इनोवेशन सेंटर है यहाँ पे, जहाँ पे सैमसंग, क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है जिसको सारी दुनिया जानती है, और वहाँ पे वो लोग आज हमें विज़िट करवाएंगे कि जो नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो, और उसके अलावा जो उनकी लेगेसी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो मैं उसको भी शूट करूँगा और ताकि हमारी वो एक मेमोरी बने। मेरे साथ लगभग कोई 40-50 डेलीगेट्स हैं डिफरेंट मुल्कों से, और लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स यहाँ पे हुए हैं, डिफरेंट टीम्स बनी हुई हैं। हम उसके हिसाब से अपनी अपनी बसेस में बैठेंगे और फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जी हमने ब्रेकफास्ट अपना ले लिया है और अभी मैं ये एक ज़बरदस्त हेल्दी ब्रेकफास्ट करने लगा हूँ और इसके बाद फिर अपना हम स्टार्ट करते हैं सफ़र। तो ये जी हमारी बसेस आ गई हैं और ये लाइन अप हो रही हैं ताकि जो है वो हम लोग इसमें बैठे हैं और फिर अपने टूर के ऊपर जाएं। ये शुक्रिया कोरियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का और एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का, जिन्होंने ये ट्रिप अरेंज किया ताकि मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो कोरिया के अंदर जो इनोवेटिव सेंटर है उसका विज़िट करें। चलें चलते हैं। Royal Temporary Palace, also located in Suwon City, okay, in the morning. And then we're going to have a welcome lunch at the someplace, APU 2003, welcome lunch. And we're going to go to the Ramada Hotel. at the Ramada Hotel in Suwon. And the president of Korea Tourism Organization will have a welcoming address, as well as KBS Vice President, and as well as the president of APU, as will give you a welcoming address. All right. Okay, I'm a tour guide, and we have a supporting guide, Uni. He's right here, wearing black and white, and we have a great KBS PD, Hyunsu, who speaks excellent English. He was very knowledgeable here today. So if you have any questions, any problems, or any need help, please do not hesitate to ask us, and we'll be willing to help you as much as possible. All right? Okay, today's weather is very sunny and bright. Now the temperature is about 12 degrees in the morning, and it's gonna be about 20 degrees in the afternoon. So we're gonna have a good day. Okay, make sure that your seatbelt is securely fastened. And meanwhile, while we will go to the city of Suwon first. It will take about approximately 1 hour from here. Okay, so meanwhile, you're seated, make sure that your seatbelt is securely fastened. And meanwhile, I'm gonna explain about the history of Korea, and then one thing, something curious about Korea. All right? Okay, I'll sit down for my safety and fasten my seatbelt too. District where we were, and then Gangnam district is another new part of the city, and then Hwangha district over the mountain is the original old town. So Gwanghwamun is more like a diplomatic and also cultural center, while that Yeouido is a political and also economical center, which is like Manhattan also, and Gangnam is more like finance and also high tech.
So I hope this give you little explanations of on our city, on Seoul. And Excuse me. oh yeah, go ahead. I'd like to ask something. I don't know whether you should see on your left side. तो ये हम जी अंदर आ गए हैं और यहाँ पे हमारे लिए ब्रीफिंग का इंतज़ाम किया गया है सैमसंग के स्टाफ ने। और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं, बैठे हुए हैं। चलें सुनते हैं क्या कहते हैं। तो ये जी ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ का सफ़र है जी। ये पुराने रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये VTR है और ये ऊपर एक कैसेट प्लेयर भी है। इसके साथ ये पर्सनल कंप्यूटर, वेरी ओल्ड। ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, यानी बता रहे हैं कि जो सैमसंग का लोगो है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, ये देखें। और आजकल जो हम सैमसंग देख रहे हैं वो ये है। दिस इज़ एवोल्यूशन ऑफ सैमसंग। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये आप देख सकते हैं जी, ये हम ऊपर आ गए सैमसंग इनोवेशन सेंटर। ये सैमसंग हेडक्वार्टर है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आप यहाँ से व्यू ले सकते हैं इसका। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है बेसिकली डिज़ाइन एंड इनोवेशन ऑफ सैमसंग गैलेक्सी मॉडल्स। यहाँ पे आप वो जो नए गैलेक्सी मॉडल्स देखते हैं और ये देखें। अब हम इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये बेसिकली ट्विन टावर्स हैं जो आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। ये सैमसंग के हेडक्वार्टर में हम एंटर हो गए। यहाँ पे हमारा ग्रुप फ़ोटो होगा। वो जो थिएटर स्क्रीन थी वही थिएटर स्क्रीन ओपन हो गई है और हम उस थिएटर स्क्रीन के अंदर से म्यूज़ियम के अंदर एंटर हुए हैं। इसके ऊपर एक वीडियो भी चलाई थी उन्होंने, लेकिन वो कॉपीराइट की वजह से उसको रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। Stretches way back to the 18th century, and starting from this point, many scientists and inventors have created marvelous products such as the incandescent lights, BC. Humans accidentally discovered static electricity while polishing amber jewelry with fur. Later, scientists also found a way to generate greater ये जो कैंप सा बना हुआ है ये आप देख रहे हैं, जो एक इसके अंदर आपने देखा है कि नीचे से जब उसको हमने स्क्रॉल किया तो यहाँ पे ऊपर वीडियो चल रही है। Many electrical experiments were conducted vigorously. And finally, Volta's battery was invented in 1800, which could generate a continuous flow of electrical power. Many scientists discovered that magnetic fields were formed around a wire when electric charges were moving in. they wanted to store the electricity in a much safer way.
That is why they डिफरेंट came up with the Volta battery in 1800. इलेक्ट्रिसिटी की जो So why this इन्वेंशन है Volta उसके बारे battery में is बताया having जा able रहा to है. be transformed into dynamic electricity, and like this, through the many discoveries related to electricity, scientists could develop electricity even more. So through this, they created many electrical products, and you can see the electrical products as we move on to our popular in the 1930s. ये This रेडियो is the cathedral-shaped vacuum tube radio, which is the Philco 90. So, with its aesthetic design and also its high-tech radio functions, this was very popular in the 1930s. And moving on, when the material of the radios changed from wood to plastic, if you look closely, you can see that a rainbow is engraved inside the radio. That is why the radio was called the rainbow radio. And onto your right side, you can see that a light is attached to the radio, and it had additional functions other than just playing the radio. That was why this radio was called the lullaby radio. And like this, when many electrical products have been created, people wanted even more. That is why the individual inventors could not withstand the consumption rate, and that is why the corporations started to lead the electronics industry starting from the 20th century. Now let's move downstairs to meet the new era. Please come this way. Here you can see some advertisements that were very popular in the 20th century. And please look at the advertisements as we move down to our... अब हम आगे बढ़ रहे हैं जी. Everyone, please come forward. Number 3, please forward. देख सकते हैं नंबर 2 कोर ऑफ इनोवेशन हॉल नंबर 2. अब हम रेडियो से नेक्स्ट सेमीकंडक्टर की जो इनोवेशन है उसके बारे में देख रहे हैं. तो आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन है उसके बारे में बताया जा रहा है. आप ये देख सकते हैं वो रेडियो से स्टार्ट किया और फिर चलते चलते वो नई इनोवेशन की तरफ आ रहे हैं. Started to grow in a rapid speed. The corporations which had the system and capital started to lead the electronics industry starting from the 20th century. So in this hall, you can see the key points of the electronics industry, which focuses on semiconductors, displays, and also the mobile devices. And we are going to start off with our semiconductors from this way. Semiconductors are the fundamental material of the electronics industry, and because of that, Koreans call it the rice of the industry. Like its key factors, before the semiconductors were invented, can anyone guess what did the same role? So actually, before the semiconductors were first invented, electronic products were created based on vacuum tubes. So now let's go see some actual vacuum tubes. Here you can see the inside of the Philco 90 radio that we just saw upstairs. And you can see that this is created using 9 vacuum tubes. Because of the vacuum tubes, this product weighed up to 18 kilograms. So for example, if you purchase this radio and if you install it in your house, it was very hard to move it. And because of its bulky size, people wanted to make the electronic product. Transistor was created in the Bell Labs in 1947. So with the creation of the transistor, the size was minimized to 1/220th the size of vacuum tubes, and it also started the miniaturization of the electronic products. Moving on, you can see some radios that were created based on transistors, and compared with the Philco 90 radio that you just saw, you can see the size has become much smaller. That is why people use these as portable radios, and back then, people created pop stars like Elvis Presley, and also pop music became very popular. And by combining transistors with electrical circuits into one chip, it created the integrated circuit. With the invention of the integrated circuit, this not only reduced the power consumption rate, but it also reduced the power production costs.
With the invention of the integrated circuit, it started the PC era and people started to create much more information. And in order to process these information, high computation was required. That is why in 1970, Intel from the United States came up with the world's first 1 kilobit DRAM. So this 1 kilobit DRAM was mass produced and it was used as the standard of the computer's main memory. And countries like the United States and Japan have been leading the early semiconductor industry. Then can anyone guess when Samsung first started their semiconductor business? Samsung first stepped foot into their semiconductor business in 1974, and in 1982 they established a research institute. And also in 1983, the founder chairman Kang Lee, he came up with the February 8th Tokyo Vision, and he also announced why Samsung has to start their semiconductor business. So this officialized the beginning of Samsung's semiconductor business, and only after 6 months they तो ये जी एवोल्यूशन थी सेमीकंडक्टर की। इसमें डिफरेंट स्टोरेज है, और जो इंटेल और एप्पल ने जो शुरू में काम किए थे उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। अब हम जा रहे हैं जी डिस्प्ले की तरफ कि डिस्प्ले ने एवोल्यूशन कैसे की। आप देख सकते हैं पूरा सेक्शन है। Actually, everything began with black and white TVs. And to my right side, you can see the first mechanical TV, which was the televisor. This was created in 1925 by John Baer. And on the back side, there was a perforated disc. It rotated very quickly, and it showed the video through the right side. So does anyone have an experience using the flip book? You draw on the corner of your book. If you rotate it very quickly, it shows like a video, and this had the same law with the flip books. Unfortunately, this did not provide any sound. Moving on, ये you can ब्लैक see एंड some वाइट vacuum टीवी जो tube है TVs that was created by RCA, and this became the first mass-produced TV. उसका And here एक the television became much more widespread. Moving on, you can see some televisions that were created by transistors. And compared to the vacuum tube TVs, you can see that the size became much smaller. On the bottom side, you can see Samsung's first TV. This was co-developed with Hanyu Electronics ये in आप देख Japan, सकते हैं कि and ये this was ब्लैक एंड actually वाइट the टीवी first है, television to be exported और ये to South बिल्कुल Korea. पहला मॉडल है। 500 units of this television was exported to Panama. Moving on, you can उसके see बाद ये the Color TV, दूसरा which एक was मॉडल है। released in 1975, and you can see the most advanced technology that Samsung Electronics had back in the day. The reason why this TV is called the Econo TV was because this was very economic. It reduced the power consumption up to 20%, and also by the instant on features. Previously, people had to wait for 20 seconds. ये when वैक्यूम receiving ट्यूब time. टीवीज हैं। However, with the instant on features, the television only required 5 seconds. Moving on, you can see the world's first color TV after people tried to add more vivid colors to the black and white TV. If you look closely, you can see that it only portrays gray colors. ये मोटरोला है, ये जनरल इलेक्ट्रिक है 1958। जनरल इलेक्ट्रिक This television did not gain that much of a commercial success. However, because of the fact that it tried to portray the world in a more और ये precise सैमसंग way, का this सैनियो television टीवी, हम has अक्सर इसको exploded in ratings. सैनियो के नाम से भी Moving जानते on, हैं। you can see some color displays from multiple companies. And I would like to point out Samsung's Gumbo Plus 1 TV. और ये सोनी का पोर्टेबल टीवी, हम अक्सर इंग्लिश मूवीज़ में भी देखते हैं। ये TV was the first television in the world to change the ratio from 12 to 9 to 12.8 to 9. And back in the 1990s, people wanted to enjoy more. आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को देख सकते हैं इसके ऊपर। That is why, in order to make the screen larger, they found the cockpit an inch from each side. And that is why this television is also famous for और ये काफ़ी बड़ा टीवी है। मुझे याद है कि हमारे पास भी एक ऐसा टीवी होता था जब मैं बहुत छोटा था, बैक इन 80s। कलर टीवी की एवोल्यूशन। आप देख सकते हैं।
ये ग्रैंडिंग जो कि जर्मन मैन्युफैक्चरर है, उसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखी हुई हैं। और लो जी, ये हम यहाँ पे आ गए। ये टीवी तो आपने देखा होगा, ये तो अभी भी मैंने कई जगहों पे पाकिस्तान में चलते हुए देखा है। सोनी, जिसको हम ट्रिनीट्रॉन के सीरीज़ मॉडल भी कहते हैं। और ये तो इसी से मिलता जुलता टीवी अभी भी मेरे पास घर में मौजूद है। अब ये आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो नई इनोवेशन की तरफ जा रहा है। प्लाज्मा और आपका पैनासोनिक भी इसमें इन्होंने रखा हुआ है। Although robots have come into our life most recently, it has been impacting in the greatest ways. And in our mobile zone, I would like to point out the world's first commercialized mobile phone, which was the 980. ये बेसिकली डिस्प्ले की एवोल्यूशन है कि कैसे जो है वो डिस्प्ले इंडस्ट्री जो है उसने इनोवेट किया। और आजकल हम जो देख रहे हैं, ये देखें, ये QLED, UHD, 4K, ये सारी जो चीज़ें अब इवॉल्व होके यहाँ तक ये आ चुकी हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इसको प्लेस किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री को प्रिजर्व किया हुआ है। अब मोबाइल फ़ोन की हम हिस्ट्री देख रहे हैं जी। मोबाइल फ़ोन जो है उसको कैसे इन्होंने बताया हुआ। ये देखें, अमेरिकन आर्मी जो है वो वर्ल्ड वॉर के रेडियोस भी यहाँ पे पड़े हैं। दिस इज़ अ वॉकी टॉकी, दिस इज़ SCR 300 मोटरोला। ये अक्सर हम वर्ल्ड वॉर 2 की मूवीज़ में भी देखते हैं। हैंडी टॉकी है ये मोटरोला की SCR 536। IMTS, ये टेलकॉम है और थोड़ा सा ये बेहतर मॉडल लग रहा है। ये 1973 में फिर आप इस तरह के फ़ोन्स, मुझे याद है कि हम पाकिस्तानी पुराने जो ड्रामा है PTV के, उनमें मैंने एक दफ़ा देखा था। ये मोबाइल फ़ोन जो है इवॉल्व कर रहा है जी, और मोटरोला इसमें लीडर था। और फिर हम यहाँ पे आ गए और मुझे खुशी है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये मोटरोला 3210 3210 जो कि मेरे पास भी किसी दौर में था, और इसी का एक वर्जन था 3310 जिसको हम कहते हैं द मोस्ट फेमस स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन उस वक्त वो टॉप नॉच फ़ोन था दुनिया में। ये डिफरेंट एवोल्यूशंस हैं, मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हॉल नंबर 3, which is inspiring innovation. और आई थिंक ये होम थिएटर सिस्टम है जो अब मॉडर्न जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ये बता रहे हैं। ये तो नॉर्मली अब आजकल हम अपने घरों में भी देखते हैं ये सिस्टम्स जो हैं। Welcome to our final hall for today, and this is our product gallery. So until now, you have seen the efforts that human has put into the advancements of human history, and you have also seen the efforts that Samsung Electronics has put into the electronics industry. Now you are about to see how those efforts have transformed into the latest product. Everything is connected through smart things. And smart things not ये only बेसिकली जी होम ऑटोमेशन की बात हो रही है कि आप अपने सैमसंग फ़ोन के साथ जो है वो एयर कंडीशनर, होम थिएटर सिस्टम, लाइट्स, सब कुछ आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं।
provide a smarter life. The most standing out product inside our living room is probably the Neo QLED 8K 85-inch television. The reason why this television seems so borderless is not only 85 because इंच of its QLED design, but 8K also ये because it brings आपको full नज़र आ रही है enhances जो the LED resolution स्क्रीन है up to 8K और उसकी by क्वालिटी और outstanding पिक्चर क्वालिटी से ही resolution फील हो रहा है कि regardless of its कितनी original एक्सीलेंट है. quality. And when you are experiencing such a high quality content like this, if the atmosphere is not so refreshing and comfortable, it is hard for you to experience total immersion. That is why I easily use मेरा experiment मोबाइल agents फ़ोन to उसकी easily क्वालिटी को ठीक turn तरीके on, से off, or जस्टिफाई नहीं कर control the रहा, temperature and लेकिन make अगर this आप very इसको रियल popular अपनी feature आंखों in से our देखें living तो room. वाकई For इट्स example, अमेजिंग. please close the blinds. Artwork even when you turn the television on. Now we are going to move on to our home cinema, and everyone please come this way. अब ये हमें होम सिनेमा दिखा रहे हैं. Please have a seat where you feel comfortable. Welcome to our home cinema. And nowadays, instead of going to the movie theaters, people can watch the movies whenever, wherever they want in their own houses. So in our home cinema, we have the Neo QLED 4K 98-inch television, and we also have our soundbar Q990C at the bottom side. The three speakers inside the soundbar, they reflect the sound to the ceiling and creates the perfect atmosphere for you to enjoy your blockbuster movies. So I will enhance the sound for a little bit. So does the video seem more realistic? And to your backside, we have our beam projector, which is the Premiere. It is a USD projector, and we also have the rollable screen on the backside for people that wish to watch their videos in a larger screen. Like this, Samsung has been focusing on innovating their experiences of their users, and when we think of the word innovation, we cannot leave out our mobile phones. So everyone, please move to. So to my backside, we have our 5G network devices. They may not seem very familiar, however, these are essential in ये creating 5G our smart devices हैं. things. When our smart things becomes possible with the 5G network devices, you also need a mobile phone to control your smart things. So we have our Galaxy S23 Ultra model here, and by enhancing the camera's functions up to 200 million wide pixels, you can zoom up to 100 times, like this. You can see it zooms up to 100 times. And by enhancing the camera functions, we also added nitography, which allows you to create high-resolution pictures even in low light. And finally, with the anti-shake functions, when the camera tries to take pictures, it almost creates a perfect picture. Moving on, we also have our foldable series, and especially our Galaxy Z Flip 5 and Galaxy Z ये Fold मैं 5 ज़्यादा with आपको the इसलिए नहीं 36 दिखा रहा pockets. कि The ये most things that फ़ोन्स change तो from our आप सारे Galaxy यूज़ Z करते Flip हैं. 5 ये is अभी the जो curved वो जिस display, बारे में बात and कर by रही हैं वो enhancing the size of सैमसंग the Z screen फोल्ड है, 2.4 inches, सैमसंग you फ्लिप can है. easily access your functions without तो ये opening your phone. आजकल And बहुत by कॉमन adding है. the flex hint, you can see that the beginning and end has almost the same thickness, and you can see that when the phone is closed, the gap is almost removed. And by adding a USB, HDMI, and micro SD card ये slot, it ऑफिस enhances रिलेटेड connectivity प्रोडक्ट्स, for other devices. सैमसंग So backside, we लैपटॉप्स, have the all-in-one नोटबुक्स, PC. Then we also कन्वर्टेबल्स. have the gaming monitor Odyssey. So with a curved display, it increases the immersion for the game users to experience. Finally, we're going to move on to our Flip Pro. डेस्कटॉप स्क्रीन्स, कर्व डिस्प्ले. So our Flip Pro is the electrical chalkboard. So by Which using can our be smart attached to things, any desktop computer. we can easily connect our mobile devices to the electrical chalkboard. So, I'm going to draw something here. You can easily write with the pen,
You can erase it with your hands. So it has the traditional functions of the chalkboard added to it, and it also has the functions of the PC added to it. That is why you can upload up to 4 contents at once, 20 students can touch at the same time, and 50 wireless devices can be connected to it. That is why this electrical chalkboard, the Flip Pro, is one of the best devices to be used in online educational environments, and you can also use this in your office for meetings and seminars. तो ये जी हमारा टूर फिनिश हो गया और अब हम लॉबी से बाहर जा रहे हैं जहाँ से हम अंदर आए थे। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि ये सैमसंग हेडक्वार्टर है और तो ये जी आपको म्यूज़ियम जो सैमसंग इनोवेशन म्यूज़ियम है उसका टूर करवाया। कुछ जगह ऐसी थी जिसको हम फिल्म नहीं में कर सका क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड थी फिल्म, और ये इवन यहाँ पे जब हम पिक्चर्स ले रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने मना किया कि यहाँ पिक्चर्स ना लें क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ खींचते हैं फोटो, यहाँ कितने चाहिए? हाँ, क्या करें? सैमसंग ये आप देख सकते हैं सैमसंग हेडक्वार्टर्स। ये सुवॉन सिटी है जी, सियोल से तकरीबन 1 आवर की ड्राइव पे, और यहाँ पे ये सैमसंग की फैसिलिटी है। Take the photos and everything. So I'm going to explain all about. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि ये हमारी बस है और ये ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं। आप ये देखें कि जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरिंग सिस्टम है वो जस्ट एक पुश ऑफ अ बटन पे है। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि जस्ट विद अ पुश ऑफ बटन वो ड्राइव मोड में, रिवर्स में और मैनुअली 3, 2, 1 में चला जाता है। अभी हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जा रहे हैं।